इस सेशन में मैं आपको ड्रग एब्यूज टॉपिक डिस्कस करूंगी. दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर. So see, drug. What is drug abuse? All of us take drug during our lifetime. Whenever we encounter any infection or any disease, but when the drugs are taken or used for non-medicinal purpose, okay, and it also includes taking the medicines in excessive dose or frequency that impairs the physical, physiological or psychological functions. So what is drug abuse? Drug abuse means the use of drug for non-medical purpose, non-medical purposes, okay. And in other words, it is taking medicine, taking any drug or medicine in excessive doses or frequency that impairs physical, physiological means functioning of the body parts, and psychological or psychological functions, okay. So there are some major types of, there are several drug abuse, but here we'll discuss some major type of drugs abused. So major type of drugs abused, okay. So now I will discuss this one. So the first one is opioids. Just a minute, spelling गलत हो गया. Opioids, okay. So I will give you point wise what are the sources, what are the different types of opioids, what is the mode of intake. So please note it down the way I am giving. It will be easier for you to remember and also to write in the exam, okay. So these opioids source, its source is the latex of, very important, I am giving only important points, latex of papaver somniferum. So it is the scientific name, so it should be underlined separately. Its common name is opium poppy. Common name is opium poppy. And morphine is, you might have heard about the morphine. Morphine is extracted from opium, okay. And heroin is prepared by acetylation of morphine. Very important, acetylation of morphine, okay. Now next is your now come to what is heroin. Heroin is it is a its chemical name is diacetyl morphine. Diacetyl morphine, okay. Very important its name,
Okay, and it is white, odorless, कोई स्मेल नहीं होता उसमें, bitter, crystalline powder. Okay, and commonly called smack. Just a minute. Commonly called smack. Very, very important. Okay, now mode of intake, how it is taken. By snorting and by injection. So these are the two methods by which it is taken. Then now come to the effect. It is a depressant, slows body function, okay, and acts on opioid receptors present in, very important, central nervous system. Central nervous system, that is CNS, and gastrointestinal tract. Okay, only you remember these points whatever I am giving here. Okay, so these are the effects. They are the depressant, slows the body function, act on opioid receptor present in the central nervous system and gastrointestinal tract. Okay, now come to the next one. Okay, now come to the next one, that is cannabinoids. Cannabinoids. So the source is cannabis sativa. Cannabis sativa. Okay, should be underlined separately. वो अपने आप हो जाता है single line. Plant parts used. कौन सा पार्ट यूज होता है? फ्लावर टॉप, leaves and resin. Okay, so next, preparations. इससे क्या बनाया जाता है? ठीक है, मैरिजुआना, गांजा, चरस, hashish. Okay, then method of intake. By two method it can be taken, that is by smoking or oral ingestion. Okay, खा सकते हैं या फिर स्मोक करके ले सकते हैं. ठीक है, now come to the effect. What are the effect? The effect includes it act on the cannabinoid receptors in the brain. ये बॉडी का पार्ट लिखना बहुत जरूरी है. ठीक है, and it affects the cardiovascular system.
and it alters the perception and mood. Perception and mood. ठीक है, इसमें मूड स्विंग होता है. The next one is C, that is coca, alkaloid, which is commonly known as cocaine. Okay, so its source erythroxylum coca. Coca. Okay, so scientific name, so I have underlined it separately, and it is native of South America. Okay, and common names are coke and crack. Okay, so these are the two common names. Then method of intake. कैसे लिया जाता है इसको? बाय स्नोटिंग. ठीक है, नाक से स्नोट करके लिया जाता है, स्नोटेड. Okay, so this is how it is taken. Now come to the next one, that is the mechanism, how it works. It prevents reuptake of dopamine. You know that dopamine is a neurotransmitter, so it prevents the receptor to receive the dopamine. Okay, and causes, as a result, it causes accumulation of dopamine at synapse. देखो, ये एक नर्व एंडिंग है. ओके, तो यहां से आपका न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ रिलीज होते हैं, एंड दिस इज अनदर नर्व एंडिंग. सो यहाँ जो डोपामीन या एसिटिलकोलिन जो भी रिलीज हो रहा है, सो सपोज दीज आर डोपामीन, दिस शुड बी रिसीव्ड बाय दिस. बट यहाँ क्या होता है, आपका ये जो कोका है, दैट बाइंड्स टू दिस रिसेप्टर. एज ए रिजल्ट द डोपामीन कैन नॉट बाइंड टू this, and what will happen, the accumulation of dopamine takes place in the synapse. This is the synapse, the junction is synapse. Okay, now what are the effects? The effect includes powerful CNS stimulant, central nervous system stimulant. ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, जिसके वजह से इट क्रिएट्स यूफोरिया. ओके, एंड इंक्रीज्ड एनर्जी, हालुसिनेशन एट हाई डोज. अपने कंट्रोल में वो नहीं रहता एट हाई डोज. Okay, and other hallucinogenic plants are very important. Are datura and atropa belladonna. आपने सुना होगा atropa belladonna, जिससे आपका होम्योपैथी दवाई बनाया जाता है, belladonna. Okay, so this is all about the three major drugs that are abused. But besides that, other drugs are also frequently abused. Let me give their list. So other
drugs frequently abused. Frequently abused किया जाता हुआ ड्रग्स क्या क्या है आपका? That is barbiturates, okay, barbiturates, then amphetamines, benzodiazepine, okay, sedatives, sleeping pills, antidepressants, okay. And actually these medicines are prescribed for depression, anxiety, and insomnia, okay. But we use them, we become make ourselves addicted to this drugs, okay. The next come to the other one is your tobacco and nicotine, and nicotine, okay. So this tobacco and nicotine, let us discuss what are the products. The tobacco products are, you all know, cigarettes, then BD, cigars, gutka, gutka, okay, pan masala, and some, okay. ये सब है आपका tobacco and nicotine products. Now let us come to the active chemicals present in it. The active chemicals present in it are nicotine, that is alkaloid, okay. And now come to the action, how it acts. Stimulates adrenal gland, and releases adrenaline and non-adrenaline, okay. As a result, what happens? Increased blood pressure, and what else? Increased heart rate, increased heart rate, okay. Now, so these are the effect. Now come to harmful effects of smoking. Harmful effects of smoking, okay. We all know, still people used to take this, okay. So it increases the risk of lung cancer, throat cancer, urinary bladder cancer, okay, bronchitis, emphysema,
Okay, coronary heart disease and gastric ulcer. So these are the harmful, may lead to these things. Okay, and tobacco chewing, if it is chewed, then it causes oral cancer. Okay, tobacco chewing of tobacco causes oral cancer. Okay, now actually what is present in the smoke? The carbon monoxide is present in the smoke. Carbon monoxide in the smoke. How it affects our body? Now see, CO binds to hemoglobin instead of oxygen, and as a result it reduces ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट. ठीक है, बॉडी को डिफरेंट पार्ट्स को ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं जा सकता एंड इट कॉजेस ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन टिश्यू. ओके, सो मान लो आपके ऑक्सीजन इज हाईली एसेंशियल फॉर आवर टिश्यू ऑर्गन एंड एज ए होल बॉडी, बट अगर यही ऑक्सीजन अगर कमी हो जाए तो आपका मेटाबॉलिज्म कैसे होगा? ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग. नाउ actually your passive smokers, do you know who are the passive smokers? The passive smokers means those who are present near the person who is really smoking. So they inhale the smoke and they take the more amount of carbon monoxide than the real smoker. Okay, so they are very vulnerable to these effects. Okay, now come to the next topic, that is adolescence and drug or alcohol abuse. Adolescence and drug alcohol abuse. Okay, अच्छा अभी हम देखेंगे एडोलेसेंस क्या है. व्हाट इज एडोलेसेंस? So what is adolescence? The age of adolescence is 12 to 18 years. Okay, and it is the transition. Why they are very prone to this one? Transitional period between childhood and adulthood. Okay, and it is characterized by that, I am not writing that one. It is characterized by rapid physical, emotional and psychological changes. Then the question arises, why adolescents are vulnerable? हम किसी और के बारे में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? Okay, and that too particularly why it is given in your textbook only, because we are vulnerable to such type of addictions. And why we addict ourselves? There are so many reasons. The reasons may be, it may be curiosity, it may be because of curiosity, it may be due to adventure, excitement, maybe for experimentation, maybe due to academic stress. Okay, maybe due to peer pressure,
It may be due to family problem, or media influence. So anything can be the reason. Okay, because we in this particular age we are getting exposure to these things, whatever I have written here. So that's why the chance of vulnerability is more. Now come to what is addiction. एडिक्शन हम किसको बोलेंगे? साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑन ड्रग्स और अल्कोहल. ठीक है, अगर आप इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो, ये अगर हम इस टाइम पर नहीं पिएंगे तो हम पागल जैसे हो जाएंगे, तब हम उसको बोलेंगे एडिक्शन. ओके, एंड अब लाइक द स्ट्रॉन्ग डिजायर, addiction means also the strong desire to experience pleasure. ठीक है, आपको खुशी देता है ये. ठीक है, तो आपको मजा आता है कि हम पिएंगे और मजा लेंगे. ओके, सो जिसके वजह से आप क्या करते हो? रिपीटेड यूज, लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, एंड इंक्रीज्ड क्रैविंग. ओके, सो ये है एडिक्शन का फीचर्स ऑफ एडिक्शन. नाउ इस केस में होता क्या है? दैट इज कॉल्ड टॉलरेंस. ओके, टॉलरेंस क्या होता है? इसमें बॉडी कितने देर तक टॉलरेट कर सकता है, उसके बाद और टॉलरेट नहीं कर पाएगा. बॉडी रिसेप्टर्स become less responsive. ओके, बॉडी का जो रिसेप्टर होता है वो लेस रेस्पॉन्सिव हो जाता है बिकॉज ऑफ एडिक्शन. एंड जिसके वजह से हमको क्या चाहिए होता है? हायर डोजेस. दिन पर दिन हमारा डोज बढ़ता जाता है. हायर डोजेस रिक्वायर्ड फॉर सेम इफेक्ट. सेम इफेक्ट के लिए हमको उसका डोज बढ़ाना पड़ता है. एंड इट लीड्स टू ए विशियस साइकिल. ओके, नाउ कम टू डिपेंडेंस. व्हाट इज डिपेंडेंस? डिपेंडेंस हम किसको बोलेंगे? इट इज द फिजिकल डिपेंडेंस on drugs. Okay, and as a result of dependence, body develops withdrawal syndrome. Okay, withdrawal syndrome if the drug use stops suddenly. ठीक है, कोई एडिक्टेड हो चुका है, अगर हम उसको सडनली ड्रग को बंद कर देंगे तो तब विड्रॉल सिंड्रोम दिखाई देगा. सो व्हाट आर द विड्रॉल सिंड्रोम? द विड्रॉल सिंड्रोम्स आर एंजाइटी, ट्रेम्बलिंग, sweating, and nausea. Okay, and in severe cases hospitalization is required and medical supervision.
Okay, and this dependence may force the individual to ignore the social norms to obtain drugs. Okay, now come to the immediate effect of drugs and alcohol abuse. तो इमीडिएट इफेक्ट क्या होता है? ठीक है, सो रेकलेस बिहेवियर, देन वायोलेंस, एग्रेशन, ओके, vandalism, poor judgment, and road accidents. ओके, एंड ओवरडोज, ओवरडोज में क्या होता है? इट मे कॉज रेस्पिरेटरी फेल्योर, सांस बंद हो सकता है, हार्ट फेल्योर, सेरेब्रल हेमोरेज और ब्रेन हेमोरेज, okay, coma, and ultimately death. Okay, so these are the immediate effect. If taken in overdose, then these are the effects. Okay, now what are the warning signs in adolescence? आपको कैसे पता चलेगा कि एक adolescent जो है वो addicted हो चुका है? ठीक है, that is very important to know for a parent. So warning signs in adolescent. क्या क्या वार्निंग साइन है? पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, अच्छा पढ़ता था लेकिन अभी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे रहा है, फ्रीक्वेंट एब्सेंस फ्रॉम स्कूल, पुअर हाइजीन, डिप्रेशन, आइसोलेशन, अलग रहना पसंद करेगा, फैटिग, ओके, देन एग्रेसिव बिहेवियर, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज, ओके, चेंज इन ईटिंग हैबिट, चूजी हो जाएगा बहुत, चेंज इन ईटिंग habit, sleep disturbance. Okay, so these are the warning signs. Okay, then if this will continue, अगर ये कंटिन्यू करेगा तो क्या होता है आपका? सो लॉन्ग टर्म consequences, लॉन्ग टर्म consequence क्या होता है? सोशल इफेक्ट, सोशल इफेक्ट क्या होगा आपका? थेफ्ट, चोरी करेगा, ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, हमेशा फैमिली में झगड़ा लगा रहेगा, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, ओके, रिलेशनशिप ब्रेकडाउन, ओके, सो दिस इज द सोशल इफेक्ट. अभी हम देखेंगे उसका हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा. ठीक है, सो हेल्थ इफेक्ट, इससे एड्स होने का चांस है, ऐसा नहीं कि मैंडेटरी हो जाएगा,
अगर इन्फेक्टेड नीडल को यूज़ किया जाएगा। देन हेपाटाइटिस बी होने का भी चांस है। देन लीवर सिरोसिस, लीवर डैमेज हो सकता है। एंड नर्वस सिस्टम डैमेज। ठीक है। नाउ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट विल अफेक्ट द फीटल डेवलपमेंट। अभी और एक चीज देखो, आजकल ये एक ट्रेंड बन चुका है, ड्रग एब्यूज इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में ड्रग एब्यूज कैसे, जिसको कहा जाता है डोपिंग। ठीक है। सो कॉमन सब्सटेंस क्या क्या मिसयूज होता है? नैक्रोटिक, एनाल्जेसिक, ओके, एंड एनाबोलिक स्टेरॉइड्स, जिससे इंस्टेंट एनर्जी ज़्यादा मिलेगा। डायूरेटिक्स, ये सब में एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी ज़्यादा मिलता है, इसीलिए इसको मिसयूज किया जाता है। एंड क्यों लिया जाता है इसको? पर्पज ऑफ टेकिंग दिस आर इंक्रीज मसल मास। अब देखो जो जिम जाते हैं ना, इसको मिसयूज करते हैं। इम्प्रूव एंड्योरेंस, एनहांस परफॉर्मेंस, इंक्रीज एग्रेशन। जैसे बॉक्सिंग कर रहे हैं या कुश्ती कर रहे हैं तो उसमें एग्रेशन की बहुत ज़रूरत होती है, तो एट दैट टाइम दे टेक दिस वन। अभी हम देखेंगे व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। एनाबॉलिक स्टेरॉइड का साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। ठीक है। एनाबॉलिक मतलब जो एनाबॉलिक प्रोसेस, मतलब ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस होता है जिससे एनर्जी रिलीज होता है, अगर वो प्रोसेस को आपको इंस्टेंटली इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या हो सकता है? इन फीमेल एंड मेल में मैं आपको अलग अलग दे रही हूँ। फीमेल में क्या होगा? मैस्कुलाइनाइजेशन। ठीक है। मेल लाइक कैरेक्टर डेवलप होगा, जैसे डीप वॉइस हो गया, फेशियल हेयर डेवलप होने लगेंगे, ओके, मूड स्विंग होगा, डिप्रेशन होगा, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके। बट मेल में क्या होगा? लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन द मेल। मेल में भी मूड स्विंग, ओके, एक्नी, मूड स्विंग, एग्रेशन, टेस्टिकुलर साइज छोटा हो जाएगा, टेस्टिकुलर साइज डिक्रीजेस, मीन्स जो उसका मैस्कुलाइन कैरेक्टर है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगा, ओके। डिक्रीज्ड, एक मिनट, डिक्रीज्ड स्पर्म काउंट, ओके, लीवर डैमेज। So mainly it will affect the sex organs, okay. Now in adolescent, severe acne, premature closure of growth plates, stunted growth, ये सब हो सकता है। Now come to the prevention and control. सबसे पहला है अवॉइड पीयर प्रेशर, ओके।
So respect individuality, avoid forcing children beyond their abilities. ठीक है, अगर कोई पीयर आपको बोल रहा है एक्सपेरिमेंट करने के लिए या कोई एडवेंचर एक्टिविटीज करने के लिए, तो आप सीधा उसको नो बोलना सीखो. ओके, देन एजुकेशन एंड काउंसलिंग एंड काउंसलिंग. तो इसमें आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाना है, ओके, एंड एनकरेज हेल्दी हॉबीज. हेल्दी हॉबीज क्या होते हैं? जैसे स्पोर्ट्स आप खेलो, पढ़ो, ओके, देन म्यूजिक, योगा, आर्ट, कुछ भी करो. अगर आपको तब भी आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, देन सीक हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स, टीचर्स और ट्रस्टेड फ्रेंड्स, जो कि आपको लगता है कि आपको सही तरीके से वो गाइड कर सकता है. ओके, ट्रस्टेड फ्रेंड्स एंड आइडेंटिफाई, ट्राई टू आइडेंटिफाई द danger signal. Next is identify danger signal. ओके, डेंजर साइन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो अर्ली डिटेक्शन कैन प्रिवेंट एडिक्शन, नहीं तो वो एडिक्शन में चला जाएगा. ठीक है, एंड इसके लिए क्या करना पड़ेगा? टीचर्स एंड पेरेंट्स शुड रिमेन ऑब्जर्वेंट. ओके, देन इसमें प्रोफेशनल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है. ओके, जिसमें हम किसका हेल्प ले सकते हैं? साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, डी एडिक्शन सेंटर्स, ठीक है, देन रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम. So there are so many things are there by which we can prevent this bad habit or addiction. So recovery is possible with treatment, counseling, family support and strong determination. So this is highly essential. Okay, and there are in the present era there are so many ways by which an adolescent can get distracted, but we the elders as well as the child himself has to be very careful. He has to identify the danger sign so that he can make his strong foundation of his career. Okay, so this is the end of this chapter, human health and disease. So I'll be giving you the board questions. You solve those questions, then I will discuss the answers. Okay, thank you.